Swara Bhaskar scolded an ex-user after she praised her vegetarian food habits. इसी से जुड़ी और डिटेल्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। एक्टर स्वरा भास्कर ने क्रिटिसाइज किया नालिनी उनागर को over her proud to be vegetarian tweet. Taking to X on Sunday, Nalini shared a picture of a meal. It consisted of fried rice and paneer dish. Sharing the photo, Nalini wrote, "I'm proud to be a vegetarian. My plate is free from tears, cruelty and guilt." उस पे रिप्लाई करते हुए स्वरा ने लिखा, "Honestly, I don't understand this smug self-righteousness of vegetarians. Your entire diet is made up of denying the calf its mother's milk, forcibly impregnating cows, then separating them from their babies and stealing their milk." उन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा, "You eat root vegetables, that kills the whole plant. Please relax with the virtue signaling just because it's Bakri Eid." अब ऐसा ट्वीट स्वरा भास्कर ने करा तो, लेकिन उसके पीछे का रीजन is speculated to be his husband Fahad Ahmed. And Swara's tweet comes from a few months after she celebrated Eid al-Fitr. She spent the festival with her husband Fahad Ahmed and daughter Rabia. Swara shared glimpse of her Eid celebrations on her Instagram stories. In one of the stories, Swara was seen with Rabia as she pointed the Eid ka chand. In another picture, Swara, her daughter and Fahad posed for a family picture together. While Swara is Hindu, Fahad is Muslim. पिछले साल स्वरा ने अपनी बेटी राबिया के लिए छठी पूजा रखी थी, जिसकी फोटोज भी उन्होंने शेयर करी थी और कहा था she has been able to find cultural similarities between her and Fahad's families. Swara had written, "The child is a mishmash of the mishmash we are. So she is 62% UP, 12% Bihar and 25% Andhra. And I'm all for representation and I'm always here for celebration." Moreover, since our wedding, we've been discovering common cultural practices that both Hindus and Muslims in northern India share, which reinforces my beliefs that human beings can come from all manner of diversity, but love and joy will find a common language. हालांकि स्वरा को फहाद अहमद से शादी करने के लिए बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, as बहुत लोगों ने उनको बोला था कि जो हिंदू औरतें मुस्लिम लड़कों से शादी करती है वो एंड में मर जाती है। और कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर कवरिंग स्वरा इन ब्लैक टैर्पोलिन। खैर, स्वरा इस सब ट्रोलिंग से मूव ऑन कर चुकी हैं। एज स्वरा ने जब अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, तब उन्होंने शेयर की थी कुछ फोटोज अबाउट द अनकन्वेंशनल येट डीपली चेरिश्ड बॉन्ड। इन अ हार्टफुल नोट, भास्कर रिफ्लेक्टेड ऑन द डिफरेंट वर्ल्ड्स विद अ बॉलीवुड बैकग्राउंड एंड हिज पॉलिटिकल बैकग्राउंड, व्हिच हैपेंड टू बी जस्ट वन ऑफ द मेनी डिफरेंसेस। उन्होंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे स्टेटमेंट दिया था, "वैसे wise men say only fools rush in." She began with the lyric of the Elvis Presley song and said, "Fahad and I certainly rushed into marriage, but we are friends for 3 years prior. It was a love neither of us noticed blossoming. Perhaps because of the differences between us were many." Well, आपको कैसा लगता है स्वरा और उनके हस्बैंड का बॉन्ड, और क्या स्वरा का कहना सही था जब उन्होंने फूड ब्लॉगर को डांटा? Let us know your views in the comment section below, and for more such latest updates, do follow our page.